BYJU'S Exam Prep brings to you the second All India Open Mock Test from 21st of October to 31st of October. Go ahead and register now in the BYJU'S Exam Prep app and compete against thousands. Welcome to BYJU'S Exam Prep. So today we are going to discuss a one-year plan for legal reasoning preparation, right? So I'll actually not just discuss legal reasoning because you don't need an year to prepare for legal reasoning. You just need a proper timetable. So we shall discuss everything for every section, not just legal reasoning. ठीक है, लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए 1 साल नहीं चाहिए होता, कुछ 1-2 डेडिकेटेड मंथ्स चाहिए होते हैं. इस एग्जाम में कुल मिला के 5 सेक्शंस हैं, उन पांचों सेक्शंस को आपको टाइम देना है. किस तरह से देंगे ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, राइट? So before we, okay, so the first thing the question that mostly is asked is, when should you start with your CLAT preparation? Now, see, if you should understand that CLAT is a cutthroat competition, ठीक है? बहुत बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस इससे एसोसिएटेड. आई एम गुड क्रिश, थैंक यू सो मच. कुमकुम, सॉरी, आई एम गुड कुमकुम, हाउ हैव यू बीन? ओके, सो बहुत बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस इस एग्जाम से एसोसिएटेड है और बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. बच्चे बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं. तो अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है हर चीज करने का. सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत कम भी नहीं है. अगर उस सिलेबस को टाइम से पूरा करके एक थरो रिवीजन कर लिया जाए और उस रिवीजन की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो क्लैट को एक बहुत अच्छे स्कोर और रैंक से क्वालिफाई करना आसान हो जाता है, राइट? प्लस अगर आप सही टाइम पे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है हर एक सेक्शन को लेके, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लीगल हो, वो इन डेप्थ हो जाती है. और बिल्कुल एट द एंड कुछ ऐसा बचता नहीं है जो आपको एंशियस करे, ये नहीं पढ़ा, ये रह गया, ये भी पढ़ना था, ये नहीं पढ़ पाया, ये अधूरा है, ये कब पढ़ूंगा, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया. तो ये सारे एंजाइटी कॉजिंग पॉइंट्स जो है, एंजाइटी कॉजिंग पैरामीटर्स जो हैं, वो सही टाइम पे प्रिपरेशन करने के बाद नहीं आते, राइट? नाउ क्लैट प्रिपरेशन फॉर 1 ईयर, 1 साल की क्लैट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? सबसे जो the best tip that anybody can give you for this is कि भाई आप प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली प्लान करिए, स्मार्टली प्लान करिए. पहले देखिए कि क्या आपके पास वाकई पूरा रफली 1 साल है या 1 साल से ज्यादा, या फिर आप अपने बोर्ड्स का टाइम भी निकालिए. क्लैट की प्रिपरेशन आइडियली 9 मंथ्स में होनी चाहिए क्योंकि 3 मंथ्स आपको अपने ओके, आई एम सो सॉरी, डिडंट सी यू देयर बडी. So what I'm saying is ideally you should be done with your preparation within 9 months because you need to keep aside 3 months extra for your boards, right? Boards, pre-boards, viva, everything that goes on in your school. So you need to keep 3 months aside for that. In order to do that, you need to be well versed with your preparation during 9 months, right? So the best tip is to prepare smartly, is to create a proper timetable in which you can do everything. So that's what we are going to discuss today. Now, with a proper study plan, the right study resources, hard work and time management, you can very easily crack the exam. It's not hard. You can very easily do it. Now, before we proceed further, you should know that there's a test series going on. It's an extremely important and a useful series. Everybody should take it. Instead of going for multiple books, you can just subscribe to this one test series and it will cater to at least 5-6 books. It is more than the content given in those 5-6 books. Okay, so do go for this series and it's available at a very reasonable price. Now, the first thing is to join an online coaching. That is a first thing, right? So according to everyone, if there's a competitive exam for which you are preparing in a guided scenario or a guided setup in which you have mentors guiding you, experts teaching you, telling you what to do, when to do it, how to do it. So if you do that, if you do everything even in a disciplined setup where you are receiving consistent guidance, then it is very, very probable that you will be able to
fulfill the requirements of the exam and do what is required in the exam, right? So online coaching gives you a lot of advantages. For example, the fundamentals get clear. If there is a problem that happens between, for example, not being able to perform well in mocks, a concept clarification, a particular problem that may arise, not able to balance how to study, when to study, right? So that does not arise if you are in a coaching. They give you a proper schedule. The teachers tell you what to study and in what time. You remain guided throughout your preparation. So that online coaching has advantages all over the place. If you want to understand what other benefits are there of online coaching, or what you learn really from these sessions, you can watch our free videos on YouTube, and you'll be able to understand how our experts teach you the concepts easily, and how significant, or how what role do they play in your preparation. The next thing is you need to understand the syllabus. Whether or not you are preparing with a coaching, whether or not have joined a coaching, this is something that you need to do. You need to know the syllabus of the exam you're going for. If you just start watching the videos without any idea whatsoever as to what you are watching, you are just wasting your time. And you really don't have much time to waste, even if you have 2 years for CLAT, because time flies and you don't even realize. So make use of every minute. Make sure that whatever moment you are spending on your preparation is contributing something. Otherwise, everything is a waste of time. So you need to understand the syllabus, what all sections are there: English, logical, legal, GK, mathematics, right? What all concepts do they really focus upon? English is huge. What kind of English are they looking for? What kind of English questions do they ask from their students? What kind of mathematics are they expecting their student to be prepared with? How much do they expect their students to know and understand law? What kind of GK do they ask in the exam? For example, do they focus on static more? Do they focus on current more? If they focus on current more, what or for how long do you have to prepare the current? Because current can be 10 years before also. It is not current, but it is still affairs, like something that happened. So are they focusing, or do they focus on news which is 2 years back, or do they just focus on something that has happened recently, right? When it comes to logical, what logical reasoning is also infinite. There are so many questions, so many concepts. So what concept are asked in CLAT, right? You need to understand these kinds of things. What are the topics? What are the sections? You need to write them all down. In this logical, these are the topics. English, these are the topics. Legal, these are the topics. Talk to your faculty. You can see in our lectures, everybody keeps telling you what all topics are important. Note them down. Try to focus on the minor sections as well. No, don't just focus on legal and GK. That legal and GK consists 50% of the paper. That is all I'm going to take care of. Other sections, I'll just leave it ram bharose. Don't do that, right? You need to prepare all the sections if you wish to achieve a rank. You just want to qualify just like that, you would be able, or you would be willing to settle for any college that CLAT may give you. That's another thing. But if you're aiming for a good college, a tier 1 college, you need to work accordingly, right? Identify the important topics from the exam point of view. Not every topic is important. In law, there are so many laws you can't even count. Not all laws are important. There's just four core laws that are there in your syllabus: constitution, contract, criminal, and torts. But these laws are also vast. They are very, very lengthy. They're, after all, laws of the biggest democracy in the world. But even from these laws, not all topics are important. There are only few which are important and relevant from your exam point of view. You need to understand those topics. Do not waste your time knowing stuff that you don't really need. Okay, you don't need those. There are some, I've seen students buying a GK static book.
and there would be multiple choice questions of some very unrelated and far-fetched facts which nobody would know about. For example, among the four people who carried Gandhiji to the grave, which one of the who among these four people was, or who among the four people was one of the men who carried Gandhi ji to the grave? इन चार में से वो कौन सा इंसान था जिसने गांधी जी की अर्थी उठाई थी? Now this is something that if you read, you would be like, oh my god, I've learned a very important fact today in my life. Is it going to be asked in any exam? No. No. That's the most irrelevant fact ever. Even if somebody asks you that, just leave the question. You don't need to know it. You don't need to know it. You don't need to know when Mughals came to India. You don't have to know who was the first ruler of Mughal. You don't have to know who was the last ruler of Sultanate. You don't have to know the amounts or the number of times the Battle of Panipat was fought, or in which years the Battle of Panipat was fought. You don't have to know the last battle between British and Mughals, or the Nawabs and Mughals, or Nawabs and British, etc. You don't have to know it. But static is still important. ये सब नहीं पढ़ना कि भाई क्या कब हुआ, पानीपत की लड़ाई कब हुई, ठीक है, और पानीपत के अलावा निजाम ऑफ जो सिराजुद्दौला थे उनकी जो ब्लैक होल स्कैंडल था वो क्या था? नहीं, ये सब इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में. इट ऑल सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हश हश मिस्टीरियस एंड एवरीथिंग, and it when you read all of this you feel historically extremely intelligent. But then is it really important for your exam? It is not. Right. So what I'm trying to say is there's only a certain chunk which is important. Rest everything is unimportant. बहुत छोटा सा पार्ट है क्लैट सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट है, और फिर वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सारे क्वेश्चंस उसी में से आ जाते हैं. तुम उसी चंक को समझ लो, उसी को फिगर आउट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लो, सिलेबस को समझ लो, डेमो क्लासेस को देख लो, और उन टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लो. उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ो और उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो. तुम्हारा क्लैट बहुत अच्छे मार्क्स से निकलेगा. ओके, मूविंग ऑन. Now you need to know the exam pattern. After you feel confident with the syllabus, you need to understand the pattern. What exactly is the pattern of exam? What do you mean, Pankaj? ये क्या चल रहा है? मतलब इस सेशन में मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं इस सेशन में आपको देखिए यहाँ पे हेडिंग भी है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक साल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है, किस तरह से एक साल के लिए प्रिपेयर करना है, द रोड मैप, राइट? सो हाउ in what month can you prepare what? That's what I'm trying to tell you. Okay, yes. After you become familiar with the syllabus, you need to become familiar with the pattern. So before starting your preparation, you need to go through the detailed exam pattern and what way the questions are asked. So CLAT is a passage-based exam. Every question is based on a passage. So how much focus do you need to give on that passage? Are the questions directly related to a passage? Is it the same pattern as you faced in your English and Hindi exams, like the unseen passage or the apatit gadyansh or whatever it was called in your school? So is it like that or is it something different? You need to understand that, right? If it is somewhat related to what was asked in your exam, obviously if they're giving you passage and questions on the passage, they're definitely hoping that you would take guidance from a passage. But then it is not school, it is a competitive exam. So every information will be given in the passage is not the case. ठीक है, अब ये स्कूल तो है नहीं कि तुम्हें सारे सवालों का जवाब पैसेज से मिल जाएगा. नहीं, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें डिराइव करने पड़ेंगे, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें पहले से ही आने चाहिए. तो ये सारी की सारी नॉलेज तुम्हारे पास पहले से होनी चाहिए. क्या पैटर्न है पैसेज का, किस तरह से पूछे जाते हैं, पैसेज पर आपको कितना रिलाय करना है, कौन से सेक्शन में पैसेज पे किस तरह का रिलायंस होगा. जैसे जीके में पैसेज पे कोई रिलायंस नहीं होगा, वो आपकी जनरल नॉलेज का टेस्टिंग है. इंग्लिश और क्वांट्स में किस तरह का रिलायंस है, लीगल में आप पैसेज को किस तरह से यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो. ये सब कुछ पैटर्न है और ये सब आपको थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच buddy. Okay, yeah, so you need to understand all that.
right? You need to understand what exactly is the pattern so that you get well versed with what you are going to face. अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस करने बैठूंगा या एग्जाम देने जाऊंगा तो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे मेरे पास. Okay, so this is the pattern and you need to get very familiar with it. Then you need to make a study plan. After knowing the syllabus and pattern of the exam, you need to create a study plan. And if you really want to do well in your exam, you need to stick to it. So you divide the topics from the most important to the least important in every section. In logical, you create a list of topics which are most important and then come to the topics which are least important. What are the most important topics? Most important topics are those topics which have the maximum probability of coming in your exam. Every faculty, every expert has a rough idea of what might come in the exam and what might not. Right. So what is important and what is not is something that every faculty is sort of aware of. Right. No, you need to talk to them or you need to watch the videos and create this list on your own, depending on what subject you're starting with. So if it is English, you need to rank your topics according to the relevance in the exam. Not just English, in all these sections. Okay, make a list according to their relevance in the exam. The most relevant topics would come at the top, the least relevant would come at the bottom. And you start with the most relevant and the most important topics. Right. Make sure when you prepare that study plan, you have included all the topics, not just the most important, but also the least important. जब आप स्टडी प्लान बना रहे हैं, जब आप रूटीन बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने उस रूटीन में वो सारे ही टॉपिक्स डाल दिए हैं. आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है. पता चला कि आपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने छोड़ दिए, फिर कोई फायदा नहीं है स्टडी प्लान का. वो लिस्ट बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि सब कुछ कवर करना था. तो स्टडी प्लान बनाते वक्त आप सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे, इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. If you're already well versed with a topic, just leave it and go over to the next topic. Or if you think that a little revision would help, just revise that topic, not that thoroughly. Don't waste too much time on it and allot time to those topics in which you are weak. Okay. Practice of sample papers. You need to practice sample papers even before even when you start the preparation. So do not keep your practice till the day of the exam. You need to start practicing as soon as you start with your preparation. So practice the intensive practice, right? The intensive practice, like, taking one mock every day or taking 5 sectional tests every day would become after you are done with your preparation. But a simple practice should continue since the day you start your preparation. So it is advised that you solve at least 1 to 2 sample papers every 15 days. So in the beginning, if you do 1 mock or 2 mocks a month, it is enough and it will give you a great idea and a great practice, right? Now, what books should you consider for CLAT preparation for 1 year? These are the books. For English, you can go for Objective General English by N. Khurmi and George. For quants, you can go for Legal Aptitude by A.P. Bharadwaj, other workbooks. Okay, I made a mistake actually. For legal, you have to go for A.P. Bharadwaj. Quant, you can speak with your respective faculty. For reasoning, you can go for Jain Pratik. For general awareness, you can go for R.K. Gupta. For previous year papers, you can go for previous year papers by A.P. Bharadwaj. Just a suggestion. You can take anything that you want. Okay. Now, this is a study plan. 9 months study and 3 months practice. In month 1, you need to start your prep. So, you start with the Hindu newspaper. That should continue. CLAT से बच्चे लॉयर बन जाते हैं. क्लैट आपको लॉ कॉलेज में पहुंचा देता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप 5 साल का कोर्स करते हो और फिर आप लॉयर बन के निकलते हो. ठीक है. अगर लॉयर के बाद आप लाइसेंस ले लेते हो तो फिर आप उस लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कोर्ट रूम वाले वकील बन सकते हो. अगर आपको जज बनना है तो फिर आप जज का एग्जाम दे सकते हो. ठीक है. अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो मल्टीपल एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं लीगल डिग्री के साथ. तो क्लैट से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ये, तो आपको लॉ कॉलेज में एंट्रेंस मिलता है इस एग्जाम से. ठीक है. ओके.
Chalo, yes, month 1 you need to start with your preparation. So the first thing that you need to do is start with government or private. Well, some colleges are semi government, some colleges are completely government, and none of the colleges private. It's either half government or government. ठीक है, जैसे आईआईटीज जो होते हैं वो इंजीनियरिंग के लिए होते हैं ना, वैसे वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ के लिए होते हैं. तो जो आईआईटीज का इम्पोर्टेंस है इंजीनियरिंग के लिए, वही नेशनल लॉ कॉलेजेस का इम्पोर्टेंस है लॉ के लिए. और ये सारे ही कॉलेज या तो कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. ओके. Yes, so you need to start with the Hindi newspaper and you need to continue with this habit till the day of the exam. ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है और इसको आपको शुरू कर देना है और एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है. Then in the first month you need to start with your GK also, art, literature, economics. So economics is advised because economics takes time. Economics टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है. और हिंदू न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमिक्स सेक्शन होता है उसको समझने के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं. आर्ट लिटरेचर का मतलब है ये देख लीजिए कि भाई किस किसने कौन से बड़े बड़े मंदिर बनवाए इस देश में, राइट. सो व्हाट आर द बिग टेम्पल्स एंड बिग स्ट्रक्चर्स दैट वर क्रिएटेड बाय हु. So which dynasty created what? Ajanta Ellora caves were created by who? They were created by Rashtrakuts, right? Or is there a what heritage or what information is there about art? So is there a dance form that comes from particular state? Kathak comes from which states? Kathakali or Kuchipudi. There's so many dance forms I don't even remember the names. So Kathakali or Bharatnatyam and this, where do they come from? What what dance practice comes from what state? So if a state has a particular art form that they have come up with, is there a special art form that a state has come up with? So stuff like that, static, you can start in your month 1. Then in month 1 you have to start with legal also. Constitution should be started in the first month, and in the constitution you need to start only with the basics. So you will start with basic polity, fundamental rights, a little bit about basic structure, all that you can do. So you can watch the videos online, you can watch the videos on YouTube, etc. हर स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं. क्लैट के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं है. अगर आप क्लैट दे रहे हैं तो आप कॉमर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी भी बैकग्राउंड से हो आप क्लैट दे सकते हैं. 11th-12th के सब्जेक्ट्स क्लैट में कोई रोल प्ले नहीं करते. ना तो प्रिपरेशन में करते हैं और ना क्राइटेरिया में उनका कोई रोल है. कोई भी दे सकता है क्लैट, बस 12th पास होना चाहिए. Okay, we have already discussed it, Shivani. Okay, so constitution, you have to start with basics, start with fundamental rights, few amendments like important amendments. Okay, or important amendments are basically discussed in the basic structure lecture. So you can actually watch the videos that I have released on the Constitution of India. That will give you an idea of what is important. Watch those videos, you'll get an idea. And you need to start with the current affairs also. अगर आप क्लैट के लिए सीरियस हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 10-12 मंथ्स की है, कि 1 साल तक की करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो अगर आप जून क्लैट में बैठेंगे तो आपके पास जून, पिछले साल के जून से आपको करंट अफेयर्स शुरू कर देना है. ये सेफ, दिस इज हाउ यू प्ले सेफ. In the month 2 you would start with, that's okay, you would start with legal and GK. ये एग्जाम का 50% पोर्शन कंप्राइज करते हैं. They constitute about 50% of the entire exam, and due to this they become really important. Also legal sort of is a tiebreaker. So let's say if you are A and there's a child B and you both are scoring the same marks, 150, 110, 110. So to break this tie, okay, thank you so much. So let's say that both students have scored 110, A and B. तो अब यहाँ पे इस टाई को तोड़ने के लिए लीगल सेक्शन के मार्क्स देखे जाएंगे.
तो जिस भी बच्चे के लीगल सेक्शन में मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी एक रैंक ऊपर होगी, ठीक है। तो लीगल टाई ब्रेकर है, इसीलिए जरूरी है कि आप लीगल पे ध्यान दें, लेकिन सारा का सारा ध्यान लीगल पे ही दे दो ये भी गलत है, राइट। बाकी सेक्शंस पे भी ध्यान देना है। सो जीके इंडियन पॉलिटी क्लास 11 12 एनसीईआरटी से शुरू करो, मतलब जितना पढ़ रहे हो उतना तो पढ़ लिया। जीके में इंडियन पॉलिटी क्लास 11 12 एनसीईआरटी, लीगल में आप लीगल स्टडीज एनसीईआरटी एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ को करिए, और मंथ 2 में आपका पूरा का पूरा ध्यान इन्हीं दो पे लगा रहना चाहिए, राइट। मेक श्योर दैट यू फिनिश all these books. Then in month 3, you need to complete your GK, like the static portion. Discuss with your faculty कि sir static में क्या important है. History, geography, economics, lucent वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा ही पोर्शन होता है जो पढ़ने की जरूरत होती है, बस वही पढ़ो और कुछ नहीं. एंड इनफैक्ट लीगल स्टैटिक में मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल साइंस को रेकमेंड करती हूँ और किसी चीज को नहीं. जीके स्टैटिक वही पॉलिटिकल साइंस हो गया. मंथ 3 में आपको टॉट, लीगल मैगजिम्स और क्रिमिनल लॉ पूरा कर देना है. 1 महीना लगता है इनको करने में, हो जाता है, ठीक है. टॉट में भी कुछ ही टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. कुछ लीगल मैगजिम्स जो टॉट और क्रिमिनल लॉ में इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और क्रिमिनल लॉ के कुछ कंसेप्ट्स प्रिपेयर देम वेल. Then in month 4, you need to start with math, verbal and LR. So math, basic math, age problems, averages, etc. English reading comprehension, basic grammar, direct and indirect speech, close tests, etc. Then go for reasoning, blood relation, analogies, direction problem, logical puzzle, fact, interference and judgment. These are the things that you can do in month 4. Month 5, you need to continue with the same thing: math, ratio, proportion, speed, distance, time, simple, compound interest, etc. English, idioms, phrases, jumbled paragraphs, one word substitution, sentence improvements. In reasoning, syllogism, clocks and calendar, logical deduction, coding and decoding. This is what you can do in month 5. Then in month 6, you need to complete the math, verbal and LR. मंथ 6 मंथ मतलब 3 महीने आपको मैथ, वर्बल और एलआर को देने हैं, 4 5 एंड 6. छठे महीने तक आपकी की सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए मैथ्स में. फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क. इंग्लिश, एक्टिव, पैसिव, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस फिलर, एरर स्पॉटिंग, एटसेट्रा. रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, असम्पशंस एंड कंक्लूजन्स, राइट. मंथ 7 से आप रिवीजन शुरू कर देंगे, सारे पास्ट ईयर पेपर्स को रिवाइज कर दीजिए अच्छे से. जीके और लीगल को पढ़ते वक्त जितने भी नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, और मैथ में कोई भी अगर फॉर्मूला था जिसके थ्रू आप सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, उनको भी मेमोराइज कर लीजिए. मंथ 7 सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन, प्रैक्टिस पे जाना चाहिए. मंथ 8 में आप मॉक देना शुरू करेंगे, और एक मॉक एवरी डे देंगे. अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी डे. Analyze how you performed, if you could do well, why did you not do well. Everything should be analyzed. Focus on getting your score better in every mock. तो अगर आज कम है, कल बेटर कैसे होगा, परसों और बेटर कैसे होगा, और उसके बाद so and so forth. ठीक है, किस तरह से मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, किस तरह से कौन से एरियाज हैं जिन पे फोकस करके अपने स्कोर को बढ़ा सकता हूँ, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. ओके. मंथ 8 और 9 में सारे कंसेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए, और ये लास्ट 1 मंथ्स में चलना चाहिए सारा. 9 मंथ्स में आपकी ये प्रैक्टिस और प्रिपरेशन पूरी हो जाती है. बाकी 3 महीने आप अपने बोर्ड्स पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं. 3 महीने के बोर्ड्स में आप चाहें तो एक मॉक एक दिन दे दीजिए, थोड़ा बहुत रिविजन कर लीजिए, हिंदू रोज पढ़ लीजिए और अपना बोर्ड्स प्रैक्टिस करते रहिए. बाकी इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. इसी में क्लैट पूरा अच्छे से हो जाता है, और आप बहुत अच्छे से रैंक के साथ अपना क्लैट जो है वो निकाल सकते हैं. ठीक है. So that's it for today, guys. I hope this session was helpful to everyone who attended. So I would request you to like the session, comment on it, subscribe to our channel if you haven't already. You can also follow us on Instagram, like us on Facebook. You can join our Telegram channel and also download our app on Google Play. So that's it. Thank you so much. I shall see you again very soon. Till then, take care. Bye-bye.